In the conservation biogeography, we will be talking about that how conservation biogeography is in action. The central goal of conservation biogeography is to help societies to maximize the use of very limited conservation funds. कंजर्वेशन बायोजियोग्राफी हमें ये बताती है कि हमारे जो महदूद वसाइल मौजूद हैं उनको हम किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जानदार और किसी भी स्पीशी को बचाने के लिए. We cannot provide the same level of protection for all the remaining areas of the natural world and to the species that currently exist. So, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते जो हमारे पास मौजूद वसाइल हैं कि हम दुनिया में मौजूद तमाम तर स्पीशीज़ को बचा सकें. The key to achieving the goal of conservation of biodiversity and the most important weapon in the fight against the biodiversity are the protected areas. तो अगर हम किसी भी स्पीशी को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे बेहतर हथियार है वो है कि हम प्रोटेक्टेड एरियाज़ यानी कि कुछ कुछ ज़मीन के कितात हम मखसूस कर दें जहाँ पे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्लरिश कर सके. The designation and placement of protected areas do not simply depend on the scientific principle. तो ये सिर्फ और सिर्फ साइंसी बुनियादों पर हम किसी भी किते अर्ज़ को हम जानदार के लिए मुख्तस नहीं कर सकते. इसके लिए कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है which we will be discussing. So, being influenced by the range of historic, cultural and legal factors. So, इसके लिए जो है वो तारीख़ी समाजी और कानूनी चीज़ें जो अवामिल हैं वो अहम होते हैं. Nevertheless, within these constraints, the biogeography has an important role in ensuring that conservation maximizes the impact of these irreplaceable conservation interventions. So whatever we do, for example, giving the protected areas, with the help of conservation biogeography, we are able to conserve maximum number of species. So here you can see the main factors influencing the creation of new protected areas. In case of scientific influences, there is prioritization schemes and rare species distribution. Prioritization का मतलब ये है कि किसी स्पीशी को हम ज़्यादा अहमियत देते हैं. कई स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो की स्टोन स्पीशीज़ होती हैं. रेयर स्पीशीज़ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि देयर आर सम स्पीशीज़ विच आर ऑलरेडी रेयर एंड वी वांट टू कंजर्व दोज. एंड देन देयर इज़ द सोशियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंसेस. कुछ ऐसे अवामिल हैं जो हमारे सियासी और समाजी असरात की वजह से होते हैं जैसे कि कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. ऑल ऑफ दीज आर also affecting that which protected area is given the status of protected area. And then there is socio-political, say, law or scientific influences. Both of these are influencing the law. So law can be international and national. So international law किसी भी मुल्क के लिए एक गाइडलाइन की सी हैसियत रखता होता है. इसका कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं होती अनलेस कि वो मुल्क उसमें अपने दस्तखत करे, उस लॉ में शामिल हो जाए. एंड देन देयर आर द नेशनल लॉज. उन्हीं इंटरनेशनल लॉज के मातहत नेशनल लॉज बनते हैं जो कि वो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने के लिए काम आते हैं. And in a series of classical papers, Desmond and Woodward put the ideas of biogeographical representation into practice. Building upon earlier map of biodiversity, they created a nested hierarchy of biological region and thereby provided a framework on the base of which we can make the protected area. So Desmond and Woodward were the scientists who gave a framework that how we can assign the protected areas on the scientific basis. So this is called Desmond-Woodward framework. It follows the greats such as Alfred Russel Wallace by dividing the world into biotic realms. We divide the world into the biotic realms. हम जो दुनिया है उसको मुख्तलिफ किताए अर्जी में तकसीम कर देते हैं जिसमें कि मुख्तलिफ जानदार रह रहे होते हैं. Then they applied the biome classification system within each of these realms, distinguishing smaller biotic provinces. अगर किसी भी दो biotic provinces में 65% से less species जो हैं वो common हैं तो then they will make different biotic provinces.
A DU approach was quickly superseded by the schemes developing by international conservation non-government organizations or NGOs. Closely related contemporary framework to the original Desmond Woodward framework is WWF. F's इको रीजन्स स्कीम. सो WWF जो कि एक NGO है उसने अपनी एक स्कीम बना ली जिसको हम इको रीजन्स स्कीम कहते हैं. And then there is the hotspots scheme. The recently formed NGO Conservation International (CI), जो कि 1987 में बनाई गई, developed a hotspot scheme which was specifically designed to maximize the number of species saved given the resources available for the conservation. So उन्होंने एक hotspots के को मद्देनज़र रखते हुए एक स्कीम बना दी और ये वो देखती है कि कहीं पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं हम उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट कर दें. An inevitable consequence of almost all prioritization scheme is that there will always be winner and losers. So अगर किसी जगह पे कुछ ऐसे जानदार मौजूद हैं जहाँ पे हॉट spots हैं जो कि hot spots हैं, तो what will happen? We will conserve that area. But what will happen to the rest of the world where those are not hotspot areas and there are species living there? So the winners are which are present in the hotspots, and because we are we are prioritizing those species. और loser कौन है जो कि उन जगहों से बाहर है और those organisms will be extinct eventually. New global biogeographical classification system for coastal and shelf areas known as marine ecoregions of the world, or MEOU or MEOW. So all of these biological systems or schemes or frameworks, these give us an idea that how we can better protect our species.